अच्छा, ये लास्ट टॉपिक टू डिस्कस, उसके बाद वी विल एंड द क्लास बिकॉज वी आर हिटिंग द बाउंड्री ऑफ एन आवर। आई हैव अनदर क्लास इन 10 minutes. तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, राइट, क्या होती हैं? इट्स वेरी सिंपल. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? जल्दी से, वी हैव 4 minutes. क्विकली. Sir, यस a निशा. scalar quantity can be known as a physical quantity which only has the magnitude but no directions. ओके, गुड. एंड वेक्टर? Like length, mass, time, and speed. And vector can be said as a physical quantity that has both the length, sorry, the परफेक्ट. magnitude and the direction. गुड जॉब. ठीक है, so ऐसे आई वांट यू एवरीवन टू पार्टिसिपेट, ठीक है, विदाउट हेजिटेटिंग ओवर हियर. तो स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी, ठीक है. इट इज अ क्वांटिटी, a physical quantity which has a magnitude, ठीक है, a unit, a SI unit, ठीक है, and a direction, right, and a direction, ठीक है. So it can, sorry, not direction, no direction, sorry, ये इरेजर चाहिए थी मेरे को, and no direction, ठीक है. So these three things are basically available, and so it's called a scalar quantity, ठीक है. So इसके एग्जांपल देख लें. What is the example for this scalar quantity? As मशाल said, ये length, ठीक है. Let's say क्या ऐसे कि length of a pipe is 10 meters, right? So it has what? It has a magnitude. It has a magnitude. Okay. It has a unit, but it has no direction specified. Okay. What angle at which it is there? Is it going towards north, east, west, south? Okay. It has no direction, so it is a scalar quantity. Okay. Let's imagine if I say time, right? So let's say time. The time the person took to, let's say, run 100 meters is, let's say, 146 seconds. Okay. Again, it has a magnitude. Okay. It has a unit, but it has no direction, right? You cannot specify direction. Time to direction cannot be specified. It is only if I go towards physics more depth, कि टाइम ट्रेवल की बात कर लो, यू कैन नॉट गो बैक इन टाइम, ठीक है. सो पॉसिबल ही है कि उसको स्पेसिफाइड टाइम की डायरेक्शन, राइट. तो दैट इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है. देन वी हैव अ वेक्टर क्वांटिटी. तो उसके लिए आई वुड हैव टू ऐड अ स्लाइड ओवर हियर, ठीक है. देन वी हैव अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर, ठीक है. सो इसमें क्या होगा हमारे पास? इसके लिए वी हैव डेफिनेशन व्हिच इज एज फॉलोज. मैं कलर कॉम्बिनेशन जोड़ते हुए. सो अ क्वांटिटी which has, as you can guess, which has a magnitude, right? उसके बाद magnitude की कुछ value होगी, would have a unit and a direction, right? It would have a direction, ठीक है. So if it has these three things combined together, it can be called as a vector, ठीक है. तो इसका एग्जांपल्स क्या होगा? इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूँ बैठ के. सो इसका एग्जांपल would be, let's say, velocity, right? कि velocity of the airplane was, let's say, 160 mile per hour eastwards, right? So इसके अंदर क्या है? इसके अंदर we have the magnitude, right? इसके अंदर we have the unit, ठीक है, and इसके अंदर we have the direction, right? So this quantity which has these three things will be called a vector, ठीक है. And let me give you one more example for vector quantity, and then we can end up सर with the story. मैग्नीट्यूड क्या होता है? Yes. मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होती है अमाउंट, कितनी है? 160 है, 10 है, 20 है, 20. दस द वैल्यू. मैग्नीट्यूड इज बेसिकली द वैल्यू, राइट? डज दैट मेक सेंस? मैग्नीट्यूड मतलब वो कोई वैल्यू? हाँ, मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट कितनी है उसकी. 160 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 1000 है, ठीक है. सो ऑन सो फॉर्थ. मेक सेंस? यस. ठीक है.
Let's discuss one more example of this. So let's say, imagine we are on Earth. Okay, this is Mother Earth over here. Okay, and let's say there is a satellite, right? Satellite charge. We have a satellite over here in orbit. Okay, let me name this, color this satellite and make its wings. Let's imagine we have a force of gravity, right? The centripetal force. Centripetal force, let's imagine this is the pull of Earth, right? This is the center of the Earth. This is the pull of Earth on the satellite. Okay? Obviously, gravity Earth, okay? Earth will be pulling the satellite, right? That is why it is moving in its orbit. Let me name this as FC. Okay? FC क्या होती है? FC is basically the centripetal force. We will discuss this in the future. क्या होती है? Don't be confused. It's just a force which is keeping the satellite in a constant orbit, right? So you can see कि इस force का direction है it is towards the center of the earth, right? Let's say मैं कह दूं कि FC is 1500 Newton towards center of the earth, right? So it has again what three things over here. It has the magnitude, okay? It has the unit and it has the direction. कहाँ पे specify हुई. So this thing is called basically what? Vector. I hope it makes sense. So ये थोड़ा सा part बाकी है, which is let me just say besides. छोटा सा part बाकी है, जल्दी से बताओ. Okay, it's making me wait. Let's wait for 2 seconds. Yeah, start. So vector addition वाला part बाकी है. इसके अंदर we will learn two methods to basically, आपको अगर पता भी होगा, it's called head to tail method. ठीक है, head to tail loop. Okay, and the second one is called parallelogram loop. ठीक है, parallelogram. So why do we need this? Let's say आपके पास दो vectors दिए हुए हैं, ठीक है, like this. This is let's say vector 1, v1, and this is vector 2. And let's say if you want to find the resultant vector of this, ठीक है, वो this would be roughly around like this. Resultant vector and theta over angle over. So if you want to find what is resultant vector का direction and magnitude, what is the theta की value, ठीक है. So gonna be solving them using these two methods in the future. Inshallah, we discuss this example. I will give you can solve this example in the class also, or I can give you the homework assignment in the next class. And this is the checklist, the first chapter summary over here. And we have 5 minutes. We can discuss the story. Which story do I want to discuss? Okay. So do you know के अच्छा any question till now? No. Mashal, any questions? Mashal, are you here? सर मेरा सिर्फ यही होगा कि एक दफ़ा आप दोबारा रिवाइज करवा देंगे हेड टू टेल रूल और पैरेललोग्राम रूल, तो बहुत अच्छा हो जाएगा. हाँ, we will क्वेश्चंस basically हाँ ये आसान हो करेंगे. जाएंगे सॉल्व. ये हम करेंगे in the next class. मैं आपको बता रहा था ना, ये lose in the next class. ठीक है, अभी टाइम खत्म हो गया. ओके सर. We just have 5 minutes. So any questions till now? हमने discuss किया है. नो सर. Okay, so last just we have 4 minutes till I have another class. So we can discuss a story. Let's discuss on time travel. So can we go back in time? Is it possible? It is possible in movies but not in real life, as far as I know. Okay, as far as you know. What about Hamza? Let me just draw some annotations over here. Let me share this slide. Hamza, is it possible to travel back in time? पता नहीं, हो सकता है. आप जोर से बोला, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही पता नहीं, शायद हो सकता है. है. शायद हो सकता है. ओके, अच्छा एक पैराडॉक्स है. पैराडॉक्स क्या होती है मैं आपको बताता हूँ बैठ के. तो एक पैराडॉक्स है. आई वुड लाइक यू टू थिंक ऑन इट. ठीक है, एंड हैव डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास. So what is a paradox? It's a never ending theory. Okay, it has no solutions. Okay, वो बस के अंदर problem. So due to the paradox, time travel is not possible. कैसे? It's called
the grandfather paradox. Grandfather paradox. ठीक है, so what does it says? ठीक है, क्या बोलती है, क्या बोलती तू? So it says, yeah, let's say there is a person, let's say, let me name it Ali, ठीक है, and he hates his grandfather, right? Let's say he hates his grandfather. Let's say he used to punish him, used to beat him up, ठीक है, कुछ let's say कुछ दुश्मनी है. So वो क्या करता है? He invents a time machine, right? He invents a time machine, ठीक है, and what does he do? He goes back in time, when he goes back in time, let's say when his grandfather was young, right? Let's say he was young, उनकी शादी नहीं हुई, he was pretty young over here, ठीक है, and let's say अली की एज is 17 years. तो वो उस टाइम पे गया जब उसके grandfather, let's say grandfather was also 17 years, right? So what is the situation now? अली भाई गए, अली भाई ने देखा grandfather को, and in the next, this is sequence 1. In sequence 2, what does it do? Let's say he goes to with his grandfather, ठीक है, इनकी बिल्डिंग के ऊपर गए. ग्रैंडफादर वाज, लेट्स से, एंजॉयिंग द व्यू. ही वाज स्टैंडिंग ओवर हियर. लेट्स मी कॉल इट ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर, आई कैन नॉट राइट जी है, बहुत सो के बैठ के. एंड अली भाई ने क्या करा? अली भाई ने उनको कुछ कर दिया, राइट? एंड फ्यू फॉलोइंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, एल, ठीक है, हिज फादर, ग्रैंडफादर बेसिकली डाइड. ओह, ठीक है. लेट हाउ डू वी ड्रॉ स्कल? लेट मी ड्रॉ द स्कल. ये ग्रैंडफादर बेसिकली डाइड, राइट? अब क्या मसला हो? What would be the issue over here? Can anyone tell me the issue? Okay, his grandfather is dead now at the age of 17. What would be the issue arriving now? Anyone? क्या हुआ issue? टिका मारो. अगर इसका पास्ट ही मर गया तो ये भी प्रेजेंट में कैसे जिंदा होगा? Yes, close. Okay, close. Okay, so what is the issue now? Okay, we have grandfather dead, right? We have grandfather dead. So if his grandfather is dead, okay, he won't marry, right? He won't, let's say, marry, okay. If he won't marry, the father, How will the boy be born if yes, the so grandfather died? his father won't be there, okay. If his father is not in the world, okay, he won't be there. Ali, let me name Ali. Ali shouldn't be there, okay. So up, this is a loop over here, right? That's why it's called a paradox. अब मैं इसको बनाता हूँ cycle, okay. So it was basically Ali, okay, and then Ali went and there is no grandfather, okay, no grandfather over here. If there is no grandfather, there is no Ali's father, then how is there Ali? Okay, how can Ali be there? So at that instant, Ali would disappear from the timeline history, because at the moment his grandfather died, the timeline would change, right? This is the timeline. This is the infinite possibilities which can occur. ठीक है, आपके let's say, as you say ना कि whatever you choose right now will deflect your future. So you have infinite possibilities right now which you can choose, and let's say आपने उस path को आपने तोड़ दिया, right? Let's say this was the path, ठीक है. Let's say this is the Ali's grandfather, ठीक है. He basically married, and let's say he had his father, ठीक है. Ali's father was born, and if there is Ali's father, then Ali was born, ठीक है. So this is the time. This is specific path over here, ठीक है. ये specific path है. अगर let's say इसने ये path तोड़ दिया, तो he won't be completing this path, ठीक है. He would basically choose another path, ठीक है. And this is the main issue over here. If you basically try to change any single event in the past, it will change the timeline very drastically. Let's say किसी ने जाके हिटलर को मार दिया पास्ट में, you won't be seeing the world which is right now which you are seeing,
So that is why this is called grandfather paradox. It is pretty crazy, right? Time travel is possible theoretically, but I will also tell you in another story in the next class. Okay, it is possible, right? And we can do it due to single equation which we have. So this is just one paradox. So paradox ये होती है कि it is an infinite loop. It is unable to complete. It is still unsolvable over here. If you find a solution to this, let me know in the next class, and we would be happy to discuss this out. And if you have any questions, let me know. Okay, till if not, till then allow it. Like you will have two vectors, you would have to find the resultant and उसका angle. Okay, that is why you will vector addition. You will do some rearranging. There's some procedure. So let's start with that. ठीक है. जैसे क्वेश्चन हो मुझे फौरन आप you can raise your hand or you can speak up. ठीक है. Let me just reduce the size of this thing. Yeah. Okay. So insert home पे जाके you will insert an empty slide. Insert empty slide over here and let's start with the head to tail. Right. We have the first thing which is head to tail. Head to tail. Is it recording? Is it recording? Yes. हाँ ठीक है फिर शुक्र मेरी सांस रुक गई थी ठीक है सही है so what is the head to tail rule imagine you have these two vectors ठीक है let me draw the vectors आपके पास ये दो vector है right let's keep it simple we have right angle triangle vectors okay it's 90 degree over here so we have v1 we have v2 over here and I give you a question okay Hamza let's say Hamza find the resultant of these two vectors right and this is part A and I also say कि find the angle theta it is making with the horizontal vector right and ये आपका 2 मार्क का है ये आपका 4 मार्क right okay so this is a question over here and you're employing head to tail rule ठीक है to solve this question अब let's start with this algorithm क्या algorithm क्या है इसके steps क्या है right वो start कर लेते हैं बैठ के let me choose magenta purple ठीक है I want to have equality I support both the rights I support equality and man and woman ठीक है so let's choose purple color over here this algorithm is as following algorithm first step is basically as follows okay the resultant vectors tail tail should touch the tail of one vector right and the second step is the resultant vectors head should touch. I will explain what is the head, what is the tail in a while. Don't be scared. Should touch the head of another head of another vector. ठीक है? So अब what is the head of a vector? What is the tail of a vector? अब वो देख लेते हैं. Let's imagine you have given this vector over here. This thing is called the tail. Okay, and this thing is called the head. Right? तो ये इस अगर आपके पास एक वेक्टर बना हुआ है तो इसका जो हेड वाला पार्ट इज दिस एंड द टेल वाला पार्ट इज दैट आई होप इट मेक्स सेंस ठीक है अब आपके पास जो डायग्राम दी हुई थी लेट्स नाउ अप्लाई द एल्गोरिथम राइट तो आपके पास अभी ये दिया हुआ था ना कि यू हैव v1 ओवर हियर यू हैव v2 ओवर हियर तो इन यू कैन अरेंज द वेक्टर राइट आपको ना वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं करना और आपको उसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं करनी लेट्स से इट इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स so you should not change the direction of the vector
Okay, you cannot also rotate it. Let's say it is pointing upward, it should be pointing upwards. You can move it left and right, up and down. You can translate the vector. That is allowed. That is halal in physics. So what would happen if you rearrange them? ठीक है, you can अच्छा मैं क्या करूँगा, मैं इस वेक्टर को इधर ले आऊँ. ठीक है, let's see how. This is vector v1 and this is the vector v2. Right, the size and the direction is same. I just basically translated it from the right, left to the right. Okay, and your resultant vector will be the following. ठीक है, ये this will be your resultant vector. ठीक है, और does it obeys the head to tail rule? Yes, it does. क्या कह रहा है result head to tail rule? कि इस resultant vector का tail should touch the tail of one vector. इसकी जो tail है वो एक vector की tail को touch कर रही है. Yes, it is touching it. What is the second rule? कि resultant vector का head should touch the head of another vector, जो v2 आपका, and it is doing that कि इसका head दूसरे vector के head से मिलता है. Right? That is the head to tail rule, and since it is forming a right angle triangle, आपको theta निकालना है, आपको resultant vector के magnitude निकालना है. So how can I find the resultant vector का magnitude at the right angle triangle? If you had done some basic mathematics, you would have an idea about this. How can I, what property can I apply over here? Mathematics. जो बहुत So what are you saying? Pythagoras theorem, right? You were saying Yes. Pythagoras theorem? समझा? कुछ और बोल रहे थे. I was saying, I was asking that what are you talking about? मैं कह रहा हूँ कि I want to find resultant, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूं मैं. मुझे v1 दिया हुआ है, v2 मुझे पता है. ठीक है, लेट्स से ये 3 है. लेट्स दिस इज 3 मीटर पर सेकंड. दिस इज लेट्स से 4 मीटर पर सेकंड. मुझे ये दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता है. आई वांट टू फाइंड r. तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, हाउ कैन आई फाइंड r? Pythagoras theorem, सही कह Yes, रहे थे आप. yes, yes. Pythagoras theorem. When apply Pythagoras theorem, you all have studied that in your grade 8, 9, 10. ठीक है, सब पढ़ के आ चुके हैं, कुछ नया नहीं है. सो पाइथागोरस भाई ने क्या करा, पाइथागोरस भाई ने बोला इफ यू हैव अ ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो उसका लेट्स से यू हैव दिस ट्राइंगल ओवर हियर. ठीक है, दिस थिंग्स इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, दिस इज कॉल्ड बेस, दिस इज थीटा, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर. सो दिस पाइथागोरस थ्योरम सेज कि h square is equals to base square plus perpendicular square. If you make hypotenuse subject, you can take square root on both sides. This will cancel out the square and the square root. So your h is basically under root base square plus perpendicular square, right? तो यहाँ पे आपके पास hypotenuse is r. Yes, your base is v1, your perpendicular is v2. So your resultant vector is basically r square equals to v1 square plus v2 square. ठीक है, if you take square root on both sides, this is going to be cancelling out the square and the square root of the r, and your therefore your r is simply what? It's v1 square plus v2 square. ठीक है, you put the values later on. This is just generalized formula. या इससे निकालते हैं बेटा. ठीक है, so this is how you solve. You will have a formula for finding the resultant vector का magnitude. I hope it makes sense. So now let's think about the theta, right? How do we find theta? आपके पास अभी ये triangle मौजूद है. ठीक है, this is v1, this is v2, and this is resultant vector r, and this is the theta. ठीक है, you know how to find r now. You want to find theta. This is 90 degree. So what property can I apply over here to find theta? Anyone? If you recall from your mathematics class, okay, this is, let's say this is your right angle triangle, this is your hypotenuse, this is your opposite, this is your base. You have your basic trigonometric property, right? Okay, sin theta equals to opposite upon hypotenuse, cos theta equals to this base upon hypotenuse. सर ये मुझे नहीं करवाया अभी. आपने नहीं पढ़ा अभी तक? नहीं. अच्छा, कोई बात नहीं, तो पढ़ लें, कुछ इतना मुश्किल नहीं है. सो ये 3 आइडेंटिटी होती हैं बैठ के, जो आपने ना याद करेंगे इन योर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर. ठीक है, तो टेंजेंट थीटा होता है आपके पास ऑपोजिट अपॉन बेस, राइट? सो आपके पास अभी भूल जाए कि आपके पास ये है, आपके पास अभी आर लेट से नहीं है, आपके पास सिर्फ v1 और v2 नोन है. ये आपको पता है ऑलरेडी, आपको क्वेश्चन में लोगों ने दिया हुआ है. ठीक है,
So let me just rub this R. ठीक है, you know how to find this R. I'm just saying कि let's imagine if you have only V1 and V2, how would you find theta? ठीक है, with these two vectors. So कौन सा फॉर्मूले के हिसाब से you will basically you can find theta. You can use this formula because यहाँ पे अगर मैं लेबल करूँ, this is your hypotenuse, this is your hypotenuse, this is your base, and this is your opposite, right? So opposite base आपको given है. So which formula incorporates opposite and base? Tangent theta. ठीक है. So you can directly use tangent theta to find your angle. That is going to be V2 over V1. And if you want to, if you know कि अगर मैं थीटा निकालना है मेरे को, तो मैं tan को वहाँ भेज दूंगा, तो it will be tan inverse V2 over V1. ठीक है. That's how you can find angle. ठीक है. So let's do an example ताकि आपको आइडिया हो जाए. So ये समझ आया मैथड पूरा सबको? So it's just a basic property. You will learn this in your mathematics course. Okay, in a while. So it's not, इसमें कोई derivation नहीं है, कुछ नहीं है, straightforward trigonometric identity है. So depending upon the things which are given, you can just use it. सर ये मुझे नहीं समझ आया, ये टेन वगैरह जो है। अच्छा, so ये यहाँ तक क्लियर है? ये कैसे आया? फर्स्ट स्टेप, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं। टेंजेंट का फॉर्मूला होता है कि ये ऑपोजिट अपॉन बेस होता है ना. सो ऑपोजिट आपकी V2 है इन दिस ट्राइंगल, आपकी बेस क्या है V1. तो मैंने ऑपोजिट की जगह V2 पुट कर दिया एंड बेस की जगह V1 पुट कर दिया. हमने टेन इस्तेमाल क्यों किया है? हमने टेन इस्तेमाल इसलिए किया है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक आइडेंटिटी होती है. अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, जिसके अंदर इफ इन अ ट्रायंगल इफ एनी एंगल इज 90 डिग्री, सो इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो इफ यू वांट टू फाइंड द अननोन एंगल, you can use these three identities to basically find your angle. ठीक है. एंगल निकालने के लिए हम ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं. साइन कॉस हमारे लिए इस्तेमाल नहीं हो रही बिकॉज हमें ना हाइपोटेन्यूज पता नहीं है इन द स्टार्ट. हमें V1 अपोजिट पता है, हमें बेस पता है. So, कौन से फॉर्मूले में अपोजिट और बेस आ रहा है हमारे पास? दैट इज द थर्ड वन, दैट इज टेंजेंट, राइट? तो वी हैव थ्री आइडेंटिटीज ओवर हियर, A, B एंड C. सो यू कैन डायरेक्टली यूज टेंजेंट थीटा टू फाइंड द आंसर. हमने बस अपोजिट की जगह V2 डम कर दिया है. ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिया बैठ के. बेस की जगह हमने V1 सब्स्टिट्यूट कर दिया बैठ के. एंड जब आप 10 को वहां भेजते हो, इट बिकम्स टेंजेंट इनवर्स. समझ आया? थोड़ा थोड़ा सा समझ आया है। अच्छा, ये स्टेप क्लियर है? द फर्स्ट स्टेप, दिस वन, ये कैसा है? V2। हाँ, ये मतलब पूरा जो आपका आइडेंटिटी बनी है. जी जी, ये समझ आ गया। ठीक है, ये समझ आ गई ना? तो बस आपको अगर ये समझ आ गया है, तो बस फिर आगे क्या है? अगर आपको थीटा, दिस इज थीटा, राइट? आई एम कॉलिंग दिस थीटा, दिस इज कॉल्ड, हम थीटा बोलते हैं. ठीक है. इसको मैं बनाया सब्जेक्ट. तो टेंजेंट यहाँ पे, अगर आप वहाँ, अगर यहाँ पे टेंजेंट को आप वहाँ रिप्लेस करते हैं, सो इट्स आइडेंटिटी कि इट बिकम्स टेंजेंट इनवर्स. सो इफ यू हैव अ कैलकुलेटर, इफ यू हैव कैलकुलेटर ओवर हियर, तो आपके पास दिखेगा टेंजेंट कहाँ पर है, राइट? यू कैन सी 10 sin 10 cos. ये उल्टा आ रहा होगा आपके पास, दिख रहा है आपको? जस्ट चेक योर कैलकुलेटर, यू हैव sin cos 10 इन योर कैलकुलेटर्स. कैन यू फाइंड दैट? यस। ठीक है, तो अगर आप शिफ्ट दबा के 10 दबाएं, यू विल फाइंड टेंजेंट इनवर्स. प्रेस शिफ्ट एंड प्रेस 10, देन you will find कि ये it is tangent inverse. So you just have to press that and put the fraction. That's it, you get the answer. सही है। समझ आ गया? मशाल क्लियर है? सर, सर जरा एक एग्जांपल दीजिए जिसमें सिन या फिर कॉस भी इस्तेमाल हो सके। नहीं, साइन और कॉस अभी इस्तेमाल इसमें नहीं होता है, मोस्टली यूज टेंजेंट. ठीक है. ठीक है। हाँ, मशाल क्लियर है? ओके, Yes, sir. गुड. So let's do an example. Let's do an example. Okay, let's do an example. And in example we can solve it out. ठीक है, let's say we have an example. ओके, सो आपके पास ट्रायंगल है जो अवेलेबल है, विच इज, लेट्स से आपको, आपने ट्रायंगल आपने सॉल्व कर लिया. लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन, बोला चलो क्वेश्चन मिला था. ओके,
तो आपके पास V1 गिवन है, लेट मी जस्ट नेम इट एज F1। आपको फोर्स 1 गिवन है, आपको फोर्स 2 गिवन है, ठीक है। एंड एक मिनट, सॉरी। तो या, सो यू गिवन F1, you given F2 and it's forming a right angle triangle, ताकि आप क्लियर हो जाए कि what are we talking about here। ठीक है, that's good to ask question। ठीक है, आगे क्या पूछूं इस क्वेश्चन। ये आपके पास F2 गिवन है and this is 3 newtons, this is 4 newtons। ठीक है, अब आपको रिजल्टेंट निकालना है इसका। ठीक है, you want to find, question is saying कि in the question का first part you want to find the resultant vector, you want to find theta। this is your question, right? वैसे एग्जाम्पल था आगे, मैं भूल गया। आगे क्वेश्चन, आगे एग्जाम्पल है हमारे पास। a paradox and we say we have a question over here। चलें, let's do this। ये सेम क्वेश्चन है वैसे, मैं 3 4 5। हाँ चलो, इट्स द सेम क्वेश्चन। ठीक है, आई कैन कॉपी इट ओवर देयर। इसको हम यही ले आते हैं ना, लेट मी ड्राइव इट ओवर हियर। So question is saying कि calculate the resultant of two forces, 3 Newton, F1 is of 3 newtons, F2 is of 4 newtons acting at right angles। ठीक है, आपको Fx दिया हुआ है, Fy दिया हुआ है। ठीक है, जो हमने डायग्राम आई बैठ के वही है, तो आपको Fx दिया हुआ है, राइट। आपको Fy दिया हुआ है, दिस इज दिस, एंड दिस इज 3 newtons एंड दिस इज 4 newtons। ठीक है, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड यू वांट टू फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एंड यू वांट टू फाइंड थीटा। ओके, अब कैसे करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हमने वैसे एल्गोरिथम हमने डिजाइन कर चुके हैं। सो लेट्स फॉलो दैट एल्गोरिथम। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ओवर हियर। सो लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट, यू वांट टू फाइंड रिजल्टेंट। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको रीअरेंज द वेक्टर्स एंड फॉर्म द ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो आपने F1 को यहीं पे रखा और F2 को आप रीअरेंज करके यहाँ पे लिया है, एंड यू विल ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर इज बेसिकली दिस, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर R। ठीक है, एंड दिस इज योर थीटा। एंड तो आपको F2 दिया हुआ है, दैट इज 4 न्यूटन, ये समझा, 3 न्यूटन। सर ये जो आर है, ये क्या हमेशा इसी डायरेक्शन में होता है? हाँ, इट ओबेज द हुक्स लॉ, इट कैन बी, सॉरी हुक्स लॉ नहीं, हेड टू टेल रूल। अगर आपका लेट से ये F1 ऐसे होता तो ये आपका ऐसे बनता। इट डिपेंड्स अपॉन द सही है। डायरेक्शन ऑफ योर वेक्टर्स। ठीक है, इट कैन चेंज। अभी इन दिस और केस, हम लोग को हर क्वेश्चन में जरूरी है ना कि एक ट्रायंगल बनाए। हाँ आपको है बस हेड टू टेल रूल फॉलो करना है ना। आपको जो वेक्टर जो बनेगा आपका, इसकी टेल शुड टच द टेल ऑफ वन वेक्टर एंड हेड शुड टच द हेड ऑफ अनदर। ठीक है, so if it is following this property then you have made the correct triangle of forces and the resultant vector direction is also correct। ठीक है, तो इसका head is pointing here। ठीक है, so let's solve for r, you know how to find r, हमने भी formula derive किया था using Pythagoras theorem, so you can apply that directly। so your r is going to be under root square of f1 square and plus f2 square, right। आपको f1 पता है, f1 is what, 3 newtons, f2 is 4 newtons, just put in the values and get your answer। Okay, so r is going to be equals to under root 3 का square plus 4 का square, and your r is going to be under root 3 का square is 9, 4 का square is 16, 9 plus 16 is 25, under root 25 क्या होता है हमारे पास, it's 5 newtons, right। so your r की जो वैल्यू अब क्या आ चुकी है, that is 5 newtons। ठीक है, आपका आंसर आ चुका है। अब आपने निकालना है एंगल, which is basically the resultant vector making with the horizontal vector के horizontal vector से वो कितना एंगल इंक्लाइंड है। Okay, so let's find the theta over here। part b में you want to find theta। so theta का फॉर्मूला आपके पास पता है, theta is equals to tan इनवर्स। you can apply sin cosine, but मैं उसको आपको बताना नहीं चाह रहा since आप लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं है, you get confused। let's say in the future inshallah when we do the past papers I will guide you कि how to use sin and cosine, right। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि जब आपने खत्म कर लिया ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इन मैथमेटिक्स क्लास,
I will guide you in sin and cosine, ठीक है, when I will waste our time on just understanding what is sin cosine. Okay, tangent inverse क्या होगा, f2 upon f1 होगा. So because why f2 upon f1, because we have this triangle, right? आपके पास this is f1 over here, सर f2, this is your resultant vector r, this is theta. Yes Hamza, Hasan, Hamza sorry. सर हम लोग कौन सा एंगल ढूंढ रहे हैं वैसे? हम ये एंगल ढूंढ रहे हैं ना, मैंने बनाया अभी, दिस वन. एंगल मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का, आप लेट्स से इफ योर रिजल्टेंट वेक्टर इज लाइक दिस, ठीक है, इज इट इज लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, आप इसको कितना एंगल से अप करेंगे, डेविएट करेंगे थीटा, कि इट इज एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट राइट नाउ व्हिच इज यहाँ पे ये पहुंचा. तो ये थीटा आपको निकालना है. रिजल्टेंट वेक्टर आपको कितना एंगल बना रहा है फ्रॉम योर हॉरिजॉन्टल वेक्टर. डज दैट मेक सेंस? यस सर. ठीक है, सो जस्ट पुट इन द वैल्यूज. आपके पास f2 was 4 and f1 was 3, right? This was 3 newtons, this was 4 newtons. So 10 inverse आप करें इन योर कैलकुलेटर्स, 4/3 करें, क्या आंसर आ रहा है? इट शुड बी 53.13. लेट मी कंफर्म इट, मुझे आंसर से याद नहीं याद, तो करते करते मुझे आंसर याद हो गए हैं. इट्स 53.13 डिग्रीज. मेक श्योर कैलकुलेटर इज इन डिग्री मोड, ठीक है, नॉट इन रेडियन. So that is the answer, and you have solved it completely. Any question in how to solve this example? Is this example clear? यस सर. Mashal? Yes. ठीक है.